हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा। सेक्शन 2 कंपाउंड सेंटेंसेस। When a sentence is composed of two or more clauses joined together by coordinate conjunctions is called a compound sentence. The connectives employed in Hindi are or, and, ya, either or, nana, neither, not, or भी, moreover, किंतु, but, भी, also, नहीं तो, otherwise, अथवा और, etc. Sentences having such connectives are generally translated by a compound sentence in English. Example: and he will as. राम और श्याम ने यह काम किया है. राम and श्याम have done this. मोहन और उसके भाई ने हरि को मारा है. मोहन and his brother have beaten हरि. मैं वहां गया और उन्हें चिट्ठी दे दी. I went there and handed the letter over to him. जाओ डॉक्टर को ले आओ. Go and bring a doctor. कालिदास और भवभूति संस्कृत के बड़े कवि थे. कालिदास as well as Bhavabhuti was a great Sanskrit poet. Note: when two singular subjects are joined by as well as, the verb according to some grammarians in singular and according to other plural, it is better to give a singular verb. मेरे पिता अथवा मैं इस नगर से अनभिज्ञ हूँ. My father as well as I is a stranger to this city. मेरा नौकर और मैं इस काम से थक गया. I as well as my servant, I am tired of this work. बाघ और सिंह मांस खाते हैं. The tiger as well as the lion eats flesh. Note: if two subjects differ in number, person, or in both, the verb takes the number and person of the subject that stand first. Either or, neither nor. Two or more singular nominatives connected by or, either or neither nor require a verb in the singular. But when one of the subjects is singular and the other plural, the verb is plural and the plural subject is placed next to the verb. मेरे पिता या भ्राता आज आने वाले हैं. My father or brother is to come today. राम या यदु ने यह काम किया है. Either Ram or Yadu has done this. मुझे न तुम्हारे पिता का डर है न तुम्हारा. I fear neither you nor your father. मैं न किताब न ही रुपए दे सका. I could give never the book nor the money. Note: when the subjects are or different persons, the verb agrees with one next to it. या तुम या वह दोषी है. Either you or he is to blame. न मोहन न मैं जाने को हूँ. Neither Mohan nor I am to go, or neither Mohan is to go nor am I. Not only but also. When two subjects are connected by not only but also or but, the verb takes the number and person of the subject that stands last. केवल माता ही नहीं, लड़के लड़कियां भी बीमार हैं. Not only the mother but the children also are ill. But the conjunctions but, only, and never
nevertheless are used to translate पर परंतु लेकिन and मगर used in हिंदी compound sentences। मैं वहां गया पर उनसे मुलाकात नहीं हुई। I went there but I could not see him। वह गरीब है पर ईमानदार है। He is poor but honest। तुमको सभा में जाना हो तो जा सकते हो पर देखो वहाँ शोर न करना। You may attend the meeting if you please, not see, only see that you do not make noise। मैंने उसे साल भर पढ़ाया पर वह फेल हो गया। I taught him for a whole year, but he got plucked। मैं उसे बिना मारे न रह सकता पर इस बार छोड़ दिया। I could not have remained without meeting him। Nevertheless, I excused him this time। Miscellaneous example। मैंने उस शेर को मार डाला तो वह बहुतों का प्राणघातक होता। नहीं तो वह बहुतों का प्राणघातक होता। I killed the tiger, else it would have caused the death of many। आप यहाँ से चले जाइए नहीं तो मुझे ही यहाँ से जाना होगा। Just go out, otherwise I myself shall have to leave the place। कहीं तो लड़के मैदान में चल रहे थे, कहीं शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे थे। At some place students were walking in the field, while at others the teachers were teaching in the class। तुम ना आप जाओगे न मुझे ही जाने दोगे। Neither you will go yourself, nor will you let me go। जाकर हेडमास्टर से कहो कि मैं आज स्कूल नहीं जा सका। Go and tell the headmaster that I could not stand school today। वक्ता खड़ा होकर बोला। The lecturer stood up and began to speak। वहाँ मैं नहीं था और भी बहुत आदमी थे। Not only I was there, but there were many others। चाहे हंसो या प्रशंसा करो, मैं इसका कोशिश करूँगा। I must do it whether you decree or praise it। तुम चाहो या जाओ, तुम चाहे रहो या जाओ, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। It does not concern me whether you stay here or go away। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इससे कुछ बहस नहीं। It matters little whether I read or not। Thank you।